Okay, friends, now we are going to your page number 103 and we'll do some brainstorming and we'll do some question answer session, and then we'll use certain words to make some sentences, and we'll differentiate the meanings of the words, then we'll arrange the sequence. Okay, let's start. First of all, talking part, put the picture in order to use the prompts to describe what happened. So, what do you think? What happened first? First was that everybody started picking up some uh, grass because it was sweet, and Mr. Wonka had invited them to eat something. And then this boy, he was misbehaving, huh? He was misbehaving, and Mr. Wonka was admonishing him and telling him not to do it. Then what he did was that he put his hand and a straw in the tree in the river of the chocolate and started drinking, and then he went further and he started to lick it with his hand and then his mouth, and then he fell down. So this was a sequence of action. Let me show you with the help of these things that what happened. So first of all, this happened was that everybody was picking grass. Then what happened was that this boy Augustus, what he did was that he lay down and put a straw in the chocolate of river, and then he started drinking chocolate. And then what happened was that he lay down and he started to eat chocolate, and then what happened was that he fell down. And this is yet another picture where Mr. Wonka is admonishing Augustus not to misbehave. Okay, so these are the sequence. This is the sequence, in fact, and in between, Mr. Wonka was admonishing him and telling him and forbidding him not to do all these things, right? And now let's go over to your further thing, that is vocabulary part. Which of these adjectives best describe Augustus? Generous, helpful, greedy, selfish, or mean? I think he was not generous, he was not helpful. Greedy, yes, he was greedy. Selfish, yes, he was selfish. Mean, yes, he was mean. Greedy because he was in greed of the chocolate and he tried to steal it. Then he was being selfish, that he was टचिंग दी, वो टच कर रहा था. सेल्फिश को बोलते हैं खुदगर्ज. खुदगर्ज ऐसा था कि वो हाथ गंदे अपने जो है लगा रहा था चॉकलेट को, और उसको मदर भी कह रही थी कि वो ख़राब कर देगा चॉकलेट और हज़ारों लोग जो बेचारे खाएंगे वो बीमार हो जाएंगे. बट ही वॉज़ बीइंग वेरी सेल्फिश, वो अपनी सिर्फ खाना चाहता था. और ही वॉज़ बीइंग मीन ऑल्सो, कि वो लोगों की बात नहीं मान रहा था और सिर्फ अपनी ही बेईमानी से चोरी से चॉकलेट खाना चाह रहा था. सो यूज़ दीज एडजेक्टिव्स टू टॉक अबाउट पीपल यू नो, राइट. जैसे एग्जांपल दिया, माई सिस्टर इज़ नेवर सेल्फिश, शी ऑलवेज लेट्स मी शेयर हर सीडीज़ एंड स्वीट्स. तो हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं बारी बारी. ठीक है, मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बताता हूँ. फर्स्ट, माई सिस्टर इज़ वेरी जेनरस, राइट. शी ऑलवेज लाइक टू शेयर हर फूड विद अदर्स. सो हमने ये जेनरस देखें, ब्लू कलर में मैंने जो लिखा है ना जेनरस, ये जेनरस का ये सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट इज माई फादर इज़ वेरी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल का सेंटेंस बना दिया. ही ऑलवेज हेल्प्स अस इन सॉल्विंग अवर होमवर्क. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट इज ऑगस्टस वॉज वेरी ग्रीडी एंड ट्राई टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द रिवर. वो बड़ा ग्रीडी था, लालची था, और उसने जो क्या किया कि उसने ही ट्राई टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द रिवर. And then next is, some people are very selfish, they only care for their own benefits. कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं. हालांकि उनके फ़ायदे में अगर थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिल रहा हो और बाकी लोगों का नुकसान हो रहा हो तो वो फिर भी वो ऐसा करते हैं, और ये बहुत बुरी बात है.
इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, इससे दूसरे लोग भी नाराज़ होते हैं और अल्लाह भी नाराज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीन। वन ऑफ आवर नेबर्स इज़ वेरी मीन, ही मिसबिहेव्ड विद हिज ओल्ड सर्वेंट। यानी देखें, हम बता रहे हैं कि ये हमारे एक जो नेबर है ना वो बड़ा बदतमीज़ है, मीन है, घटिया है, कि वो घटिया हरकत करता है। कि उसने क्या किया कि अपना उसका एक बूढ़ा सा नौकर था, उसके साथ मिसबिहेव किया और मीन, ही वॉज ट्राइंग टू बी मीन। उसने बदतमीज़ी अगर आप किसी बड़े के साथ करें और किसी गरीब आदमी के साथ करें तो somebody who does this will be called a mean person. Okay. So next is values. ये अखलाकियात क्या हैं? Read this description. Being greedy usually describes people who like to have all things to themselves. Being greedy usually describe people who like to have all things for themselves. Sometimes people do bad things to satisfy their greed, like Augustus in the story. देखिए ना, ग्रीडी जो होते हैं ना वो लोग क्या होते हैं, जो ग्रीडी लालची लोग जो होते हैं, ये लालची का लफ्ज़ जो है, ग्रीडी का लफ्ज़ जो है, वो उन लोगों को बारे में बताता है कि जो लोग सिर्फ हर चीज़ अपने लिए ही करना चाहते हैं और वो उनकी अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो दूसरे लोगों का नुकसान, दूसरे लोगों के लिए बुरा भी कर देते हैं। जिस तरह ऑगस्टस जो था ना, ऑगस्टस ग्लूप, जो उसने इस स्टोरी में जिस तरह उसने किया था। वट एडजेक्टिव अबव इज द ऑपोजिट ऑफ ग्रीडी। ऑपोजिट ऑफ ग्रीडी क्या है? जेनरस। ठीक है, जेनरस कैन बी द ऑपोजिट, इवन हेल्पफुल कैन बी द ऑपोजिट ऑफ greedy, but generous is the most appropriate. So we will say that generous is the right word to say the opposite of the greedy, right? And let's talk about who can be generous, how can we can be generous to others. For example, you are students, आप लोग students हैं, आप generosity कैसे दिखा सकते हैं? generosity ऐसे दिखा सकते हैं कि आप अपना होमवर्क करते हैं, लंच लेके जाते हैं। कभी किसी बच्चे का लंच अगर घर में मिस हो जाए और वो बेचारा अकेला बैठा हो तो आप लोगों को उससे शेयर करना चाहिए। दिस विल बी वेरी जेनरस ऑफ यू एंड दिस विल बी वेरी गुड ऑफ यू। और इसी तरीके से अगर किसी की पेंसिल उसके बेचारे की गुम गई है या टूट गई है और किसी के पास एक से ज़्यादा पेंसिल है तो उसके साथ शेयर कर लेगा, तो दिस विल बी हिज जेनरॉसिटी। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू हेल्प अदर्स। ठीक है, वी शुड बी जेनरस टू अदर्स एंड वी शुड ऑलवेज हेल्प टू दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ हेल्प। ओके, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आप देखें, आप लोगों को, दोस्तों को बताएंगे तो आप जेनरॉसिटी दिखाएंगे ना, आप यू विल बी जेनरस इफ़ यू टेल देम कि यार आओ आप भी देख लो ये वाला वीडियो, इसमें आपका फ़ायदा हो सकता है और हमें भी सवाब मिलेगा इसमें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे।